NLE, Pakistan Medical Council National Liscencing Exam. First of all, eligibility criteria. A person may attempt the NLE exam at any time after having received the undergraduate degree, whether having completed his host job, internship, foundation year, should be graduated after March 2020. So ये eligibility criteria है, मेन पॉइंट है शुड बी ग्रेजुएटेड आफ्टर मार्च 2020. नेक्स्ट वन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कि कितनी बार हम अपेयर हो सकते हैं साल में. तो साल में आप 2 बार अपेयर हो सकते हो. हाउ मेनी टाइम्स कैन आई अटैम्प्ट? देयर इज़ नो बार ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु कैन अटैम्प्ट द कंप्लीट NLE. हाउ मच डज इट कॉस्ट? फॉर फ़ी NLE जो कि 12,000 पाकिस्तानी रुपीज़ है, और इसमें जो फ़ी एग्ज़ाम फ़ी है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल फ़ी, ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, सो ये तमाम इंक्लूडेड है इन 12,000 में. Next one is exam structure. Part 1, theory component. It contains 200 MCQs, 70% from clinical sciences, 30% from basic sciences. So ये exam structure है, ये आप लोगों के लिए बहुत important है. Next one is a clinical science weightage 70%. Total MCQs 140. Medicine and allied 52. Surgery and allied 48. Obstetrics and gynecology 14, pediatrics 14, ophthalmology eye 6, otorhinology ENT 6. सो ये क्लिनिकल साइंसेज की वेटेज है 70%, जो टोटल 140 MCQs बनते हैं. नेक्स्ट वन इज अ बेसिक साइंसेज वेटेज 30% एंड टोटल MCQ 60. इसमें से जो हैं सब्जेक्ट्स वो अप्लाइड पैथोलॉजी 16 MCQs, अप्लाइड एनाटमी 12 MCQs, अप्लाइड फिजियोलॉजी 10, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी 8, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री 6, कम्युनिटी मेडिसिन 6, फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी 2. तो ये बेसिक साइंसेज की वेटेज है 30%, जो कि टोटल MCQ 60 बनते हैं. तो ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए. तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो कि स्मार्ट स्टडी कहलाती है. नेक्स्ट वन इज़ अ पार्ट 2, क्लिनिकल स्किल्स एग्जामिनेशन CSE, जो कि आप लोग जब आपका पार्ट 1 क्लियर हो जाए तो उसके बाद आप CSE क्लिनिकल स्किल एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हो. इसमें डिसिप्लिन जो है मेडिसिन एंड अलाइड के 7 स्टेशंस, सर्जरी एंड अलाइड 7, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी 2, पीडियाट्रिक्स 2, ऑप्थेल्मोलॉजी 1 एंड ओटोरिनोलॉजी 1. सो टोटल स्टेशन 20 बनते हैं. तो आपको 70% चाहिए. इसमें से 3 मैंडेटरी स्टेशन आपने जो हर उसमें होते हैं मेडिसिन एंड सर्जरी में, तो टोटल 20 स्टेशन हैं. तो आपको एटलीस्ट 70% इसमें से लेना है. ये एक स्किल एग्ज़ाम है. ये जो आप फाइनल ईयर के या 4th ईयर में आप पेशेंट को हिस्ट्री देते हो, एग्जामिनेशन करते हो, ये बेसिक स्किल्स हैं. आपने कुछ डायग्नोज करना है, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उनको आप अच्छे से आपने वो रीड करना है, और किस तरह आपने ये प्रोसीजर आपने करना है, ये आपने थॉरली बताना होता है स्टेशन पे. तो ये आई थिंक आप लोग तमाम लोग इस चीज़ से क्लिनिकल स्किल एग्जामिनेशन से वेल नोन हो, और इंशाल्लाह आप लोग क्लियर करोगे. नेक्स्ट वन, एज मेंशन अर्लियर, देयर विल बी 3 स्टेशन डिफाइंड एज मैंडेटरी स्टेशन इन CSE clinical skill examination. Failure to any one or more of mandatory station will constitute a failure in entire CSE. Mandatory station will be one from each the following stations: medicine and allied, surgery and allied, obstetric and gynecology or pediatrics. So 3 stations जो कि mandatory station है, you have to clear 3 stations, otherwise you will be considered fail. Passing criteria: part 1 70% and part 2 also 70%. Candidates who pass the theory MCQs component but fail the CSE clinical skill exam will have to reappear in the clinical skill exam component only. Such candidates will re-register for the CSE only. If a candidate fails in 3 consecutive attempts of CSE, he or she will have to appear in both the theory MCQs and clinical skill exam component on the 4th attempt. That is, after every 3 failed attempts at the clinical skill exam, candidates will have to sit the entire NLE. So this is a very important thing you have to note down.
Next one is how to register. So this is a procedure, application procedure. Step 1, log onto NLE PMC gov.pk. Step 2, sign up for an account, fill in the form with the necessary personal information, pay the fee. Payment will be made via credit, debit card or via bank after downloading bank challan. Paid challan don't need to be uploaded on the PMC only website. Verify the filled information. Once the form is submitted after payment, the application will not be able to edit their information. Confirmation notification and roll number will be received. Log on to PMC only website between 10th July to 25 July 2021 and schedule your exam date by choosing NLE examination time slot. There will be 2 examination slots per day to choose from between 20th August to 27th August 2021. Your requested exam date will be scheduled subject to availability and priority given to the registration date. So this is a whole application procedure. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई वीडियो. आई थिंक NLE एक ईजीएस्ट एग्ज़ाम है जो कि आप रिसेंटली देख सकते हैं. पासिंग परसेंटेज जो कि गवर्नमेंट ग्रेजुएट्स में बहुत ज़्यादा है. तो ये बेसिक एग्ज़ाम है. अगर आप NLE एग्ज़ाम क्लियर करते हो, इसकी प्रिपरेशन करते हो ड्यूरिंग हॉस्ट जॉब, तो या अभी एग्ज़ाम जो फाइनल ईयर में है वो इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, तो आई थिंक इंशाल्लाह NLE बहुत सिंपल एग्ज़ाम है और इंशाल्लाह तमाम लोग क्लियर करेंगे NLE एग्ज़ाम को और ये आपको बेनिफिट देगा आगे. जिन्होंने स्पेशलाइजेशन में जाना है, FCPS में जाना है या कोई बाहर के कंट्री का प्लैब देना है या कोई भी UAE कंट्रीज़ के लिए कोई AMC देना है, तो ये बेसिक स्किल्स हैं. तो इंशाल्लाह इन चीज़ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स को. इन चीज़ से परेशान नहीं होना.